Hey guys, welcome to another video lecture by Launchpad Education. In today's video, we are going to learn about the IT Rules 2021, which are also known as Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code. So these rules have come into effect. The guidelines for these rules were framed in February 2021 and they have come into effect with the notification from Ministry of Electronics and Information Technology. In this video, we will study about the guidelines of these rules and how these rules are going to impact the social media intermediaries. So let's start with the lecture. Before that, if you do not want to miss any updates, subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on our social media handles. We are there on Facebook, Instagram, and Telegram by the name of Launchpad Education. Also, if you want to access the PDF of this lecture, you can get that from our Telegram channel. Information Technology Rules of 2021. The rules have been notified under the Information Technology Act of 2000. Now, what was the purpose of this act? जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कॉमर्स करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको लीगल सैंक्शंस देने के लिए and to prevent the cyber crime. And this act also enabled e-governance, that is governance by electronic mode. Now these rules, the Information Technology Rules of 2021, they deal with social media and over-the-top platforms. Social media in the sense WhatsApp, Facebook, and all other social media websites and platforms. Other than that, over-the-top platforms, these include Netflix, Amazon Prime, etc. Now these rules, they supersede the earlier Information Technology Rules of 2011. Information Technology Act of 2000 को enforce करने के लिए पहले भी rules बनाए गए थे in the year 2011. And these rules which has recently been passed, the Information Technology Rules 2021, ये rules, ये 2011 वाले रूल्स को सुपरसीड करते हैं. मूविंग ऑन, द गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया. अब हम देखेंगे कि इन रूल्स के अंदर क्या गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं फॉर द सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज. फर्स्ट इज due diligence to be followed by intermediaries. Now intermediaries, they have to follow due diligence, और अगर वो due diligence follow नहीं करेंगे तो safe harbor provisions will not apply to them. Under the IT Act of 2000 there is a section 79 जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे. तो वो section जो है it provides safe harbor to the social media intermediaries. और अगर अब जो ये intermediaries हैं वो ये rules जो IT rules of 2021 है उनको follow नहीं करेंगे, then the immunity which is granted to them that will not be there. The next is grievance redressal mechanism. Intermediaries, जो social media intermediaries हैं उनको एक grievance officer appoint करना पड़ेगा who will deal with the complaints of the people. And उस grievance officer का जो name है और उसके contact details हैं that has to be shared by that intermediary. और जो grievance officer है, जो grievance officer जो appoint किया गया है by the intermediary, he has to acknowledge the complaint within 24 hours and he has to resolve it within 15 days from its receipt. Next is ensuring online safety and dignity of users, especially women users. अब अगर कोई sexually explicit content है, that has to be removed or that has to be disabled by the intermediaries within 24 hours of receipt of complaints. अगर कोई complaint की जाती है ऐसे content के against, then that intermediary has to remove that content within 24 hours of receipt of that complaint. Moving on, the fourth provision is that there are two categories of social media which has been created. Social media intermediaries की दो categories बना दी गई हैं. First is social media intermediaries normal and then the significant social media intermediaries. अब significant social media intermediaries और बाकी intermediaries में क्या difference है? That they have been defined on the basis of number of users. These significant social media intermediaries, they have a significant large number of users. और वो threshold क्या होगा for the number of users will be determined by the government. Now these significant social media intermediaries, ये division क्यों की गई है? इस डिवीजन का पर्पस क्या है? इस डिवीजन का पर्पस ये है दैट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को कुछ एडिशनल ड्यू डिलिजेंस फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ेगी. हम देखते हैं वो क्या होंगी रिक्वायरमेंट्स. दैट
Now, these are the additional due diligence for the significant social media intermediaries. First is appointments. Now, these intermediaries, they need to appoint a chief compliance officer, a nodal contact person, and a resident grievance officer. ये सब इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए. The next is they have to publish a monthly compliance report mentioning the details of complaints received and actions taken on the complaint. अब उनको एक monthly compliance report publish करनी पड़ेगी और उस report में they have to give the details of the complaints received and the actions taken. और उन complaints के ऊपर क्या actions लिए गए वो सब कुछ उनको publish करना पड़ेगा, उसकी details देनी पड़ेगी. Next is identification of the first originator of the information. अब जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, उनका प्राइमरी जो पर्पस है, प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम इज मैसेजिंग. दे हैव टू इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो दे हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जहां से उस इंफॉर्मेशन की शुरुआत हुई. नाउ दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट जो ये हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर की, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही पॉसिबल होगा. और वो एक्सेप्शनल केसेस क्या होंगे? दैट इज टू डिफेंड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज. देन रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन. अब अगर कोई कोर्ट या फिर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी ये नोटिफाई करती है एक इंटरमीडिएरी को कि ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आपको होस्ट नहीं करनी है बिकॉज दे आर इन कॉन्ट्रावेंशन टू द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा, तो वो इंटरमीडिएरीज उस इंफॉर्मेशन को होस्ट नहीं कर पाएंगी. नेक्स्ट इज डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड. अब इन रूल्स के अंडर एक डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड प्रिस्क्राइब किया गया है. अब इस कोड का नेचर रहेगा सेल्फ रेगुलेटरी एंड इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स अ 3-tier ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. 3 लेवल का ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वो इस कोड के अंदर दिया गया है. न्यूज पब्लिशर्स के लिए एंड OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया के लिए ये जो कोड है, एथिक्स कोड, ये प्रिस्क्राइब किया गया है. तो कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया, ये क्या है? फर्स्ट इज सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट. सो द OTT प्लेटफॉर्म्स दे वुड सेल्फ क्लासिफाई द कंटेंट इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरीज. जो कंटेंट है उसको 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देंगे OTT प्लेटफॉर्म्स खुद से, मतलब सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट. नेक्स्ट इज पेरेंटल लॉक. Platforms would be required to implement the parental locks for content classified as UA 13+ or higher and reliable age verification mechanisms for the content classified as A. So there has to be a parental lock. पीछे हमने देखा था that content has to be classified into 5 age based categories. अब जो UA 13+ से ऊपर वाला content है, इसके ऊपर एक parental lock implement किया जाएगा. And also there will be reliable age verification mechanism for content classified as A, that is for adult. Next is display the classification rating. अब जो publisher of online curated content है, they have to inform the user about the nature of the content and advise on viewer description at the beginning of every program. हर प्रोग्राम की बिगनिंग पे आपको इन्फॉर्म करना है टू द यूजर अबाउट द नेचर ऑफ द कंटेंट. अब हम देखेंगे दैट जो पब्लिशर्स ऑफ द न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया है, उनके लिए इस एथिक्स कोड के अंदर क्या लिखा गया है. अब जो पब्लिशर्स हैं उनको कुछ नॉर्म्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे. कौन से नॉर्म्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे? नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एक प्रोग्राम कोड विच इज अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट. अब इससे होगा क्या? दैट देयर विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द ऑफलाइन एंड द डिजिटल मीडिया. देन वी टॉक्ड अबाउट दैट एक 3-tier ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो इस कोड में बताया गया है, दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दीज रूल्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. और इसका मेन जो फलक्रम है दैट इज ऑन द सेल्फ रेगुलेशन. द फर्स्ट लेवल इज सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर्स. अब जो पब्लिशर्स हैं दे विल अपॉइंट अ ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हु विल रिड्रेस द कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय हिम. Then level 2 is self-regulation by the self-regulating bodies of the publishers. अब अगर 15 days में grievance redressal officer जो level 1 में अपॉइंट किए गए थे, अगर वो 15 days में उस कंप्लेंट को रिड्रेस नहीं कर पाते, then that complaint will go to the level 2.
एंड लेवल 2 पे एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी ऑफ द पब्लिशर्स। अब इस बॉडी को हेड कर सकते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई और एमिनेंट पर्सन। उसके बाद इस लेवल के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर एक और लेवल क्रिएट किया गया, दैट इज लेवल 3, विच इज एन ओवरसाइट मैकेनिज्म। Now, Ministry of Information and Broadcasting, it will formulate an oversight mechanism. So, this was all about the IT rules 2021. अब इसका implication क्या है on the social media intermediaries? Now, IT Act of 2000 has a section 79, which is known as Safe Harbor. अब इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा गया है? It says that any intermediary shall not be held legally or otherwise liable for any third-party information, data और communication link made available or hosted on its platform. कोई भी intermediary shall not be held legally liable. वो legally liable नहीं होगी अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक अवेलेबल होता है या होस्ट किया जाता है उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर। नाउ व्हाट दिस मीन्स, अब जैसे कोई सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है लाइक व्हाट्सएप और फेसबुक, उसके ऊपर कोई यूजर कोई इंफॉर्मेशन डालता है, दैट इज अ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब उस यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए वो इंटरमीडिएरी, दैट इज फेसबुक और व्हाट्सएप, दे शेल नॉट बी हेल्ड लीगली लायबल। तो एक तरह से जो ये इंटरमीडिएरीज हैं इनको एक सेफ हार्बर प्रोवाइड किया है सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट ने। पर अब अगर ये जो इंटरमीडिएरीज हैं वो आईटी रूल ऑफ 2021 के साथ कंप्लाई नहीं करते, देन द इंडेमनिटी प्रोवाइडेड टू द सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, जो इनको एक इंडेमनिटी दी गई है अंडर द सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, ये उनसे ले ली जाएगी। दैट इज नाउ दे कैन बी हेल्ड लीगली लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। सो ये रहेगा इम्प्लीकेशन ऑन द सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज ऑफ द आईटी रूल्स 2021. So that will be all for today's lecture. Also, don't forget to subscribe our YouTube channel and follow us on our social media handles. Thank you for watching.